This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. You're watching NTV Houston. This is Usman Khalid Malik. शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कैलिफोर्निया और उसकी एडजेसेंट स्टेट्स में वाइल्ड फायर्स तेजी से फैल रही हैं, जिससे बहुत से एरियाज में आज आसमान सुर्ख नजर आया। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी केली मैकिनानी कहती हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की संगीनी के हवाले से अमेरिकन को इंटेंशनली मिसलीड नहीं किया। सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने बेस्ट यूएस रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीत लिया है। और 2 रोज बाद 9/11 अटैक्स की 90th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मरने वालों की याद में न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी और पेंसिल्वेनिया में हजारों लोगों की भीड़ एक्सपेक्टेड है। यू आर वाचिंग एनटीवी ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। हर गुजरते पल के साथ ग्रेटर ह्यूस्टन में भी कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। ह्यूस्टन एरिया की बात करें तो ओवरऑल कोविड-19 इन्फेक्शंस की तादाद यहां पर 176,047 हो चुकी है। डेथ टोल 2,359 रिपोर्ट किया गया है और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 146,900 है। ह्यूस्टन सिटी में ओवरऑल कंफर्म केसेस 66,256, डेथ टोल 898 और 53,295 लोग रिकवर हुए। हैरिस काउंटी में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 45,774, डेथ टोल 573 और 43,427 रिकवरीज हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में केसेस 15,159, डेथ टोल 166 और 12,622 लोग रिकवर हुए। कैविसन काउंटी में 11,007 इन्फेक्टेड लोग, 165 डेथ्स और 8,353 रिकवरीज। मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 9,377, 125 डेथ्स और 6,437 रिकवरीज रिपोर्ट हुई। ब्राजोरिया काउंटी में 9,055 केसेस, डेथ टोल 73 और रिकवर होने वाले पेशेंट 6,702 हैं। ब्राजोस काउंटी में 5,442 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 57 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 4,333 रिपोर्ट किए गए। जबकि मैटागोडा काउंटी में 957 केसेस, 39 डेथ्स और 764 रिकवरीज देखी गई। वाशिंगटन काउंटी में 579 केसेस, 46 डेथ्स और 502 रिकवरीज। वार्डन काउंटी में 1,285 केसेस, 28 डेथ्स और 906 रिकवरीज। चैम्बर्स काउंटी में 1,184 केसेस, 12 डेथ्स और 1,087 रिकवरीज। वॉकर काउंटी में 3,828 केसेस, 48 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 3,419 है। पोक काउंटी में 778 केसेस, 20 डेथ्स और 680 रिकवरीज। ऑस्टिन काउंटी में टोटल 443 लोग इन्फेक्ट हुए, 6 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 291 है। ग्रिम्स काउंटी में 1,001 केसेस, 31 डेथ्स और 909 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में 474 केसेस, 3 डेथ्स और 365 रिकवरीज। और सैन जैसिंटो काउंटी में कंफर्म केसेस 205, 8 डेथ्स और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की तादाद 193 है। सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने बेस्ट यूएस रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीत लिया है। डिटेल्स देखते हैं आतिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। सिटी ऑफ ह्यूस्टन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एफसीसी के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल रिसाइकलिंग करता है। नेशनल वेस्ट एंड रिसाइकलिंग एसोसिएशन की तरफ से एफसीसी एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की पार्टनरशिप को रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग में बेस्ट यूएस रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इनोवेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फॉर द रिसाइकलिंग फैसिलिटीज को रिकॉग्नाइज करता है। द स्टेट ऑफ द आर्ट MRF सिटी ऑफ ह्यूस्टन का रिसाइकलेबल मटेरियल रिसीव्स, स्टोर्स, रिकवर्स और मार्केट करता है। यह $25 मिलियन का प्लांट्स 120,000 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है और एनुअली करीब 150,000 टन मटेरियल रिसाइकल करता है, जो कि सिटी ऑफ ह्यूस्टन की करंट नीड से डबल है। नेशनल वेस्ट एंड रिसाइकलिंग एसोसिएशन ने फैसिलिटी को लाउडेड किया है, जो कि 2016 के बाद फर्स्ट टाइम ह्यूस्टोनियन को अलाउ करती है टू पुट ग्लास इन देयर कर्ब साइड रिसाइकलिंग बिन्स। न्यू प्लांट में एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो कि ग्लास क्लीन अप सिस्टम और रिटर्न ऑफ द ग्लास अलाउ करने की कैपेबिलिटी रखती है। याद रहे, जनवरी 2018 में मेयर टर्नर और ह्यूस्टन सिटी काउंसिल ने काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बी में एफसीसी का प्रपोजल अप्रूव किया था to build and operate the state-of-art single stream material recovery and processing facility। मेयर टर्नर का कहना है कि सिटी ऑफ ह्यूस्टन की एफसीसी के साथ पार्टनरशिप सिटी को बहुत फायदा दे रही है और रिसाइकलिंग में टैक्स पेयर का एनुअल $500,000 कॉस्ट बचा रही है। आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। ह्यूस्टन में अलाबामा स्ट्रीट पर शूटिंग में एक ही घर के 3 लोग जख्मी हो गए। हमला करने वाले कौन थे और शूटिंग क्यों की गई, इस हवाले से अभी तक डिटेल्स सामने नहीं आ सकी। एचपीडी के मुताबिक शूटिंग इंसिडेंट 3rd वार्ड रेजिडेंस में अलाबामा स्ट्रीट के 3100 ब्लॉक में रिपोर्ट हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि ड्राइव बाय शूटिंग में सस्पेक्ट्स ने पूरे ब्लॉक से गुजरते हुए मुसलसल फायरिंग की। फायरिंग के बाद बुलेट केसिंग्स जगह जगह बिखरे पाए गए। जख्मी होने वालों में 2 आदमी और एक 15 साल की लड़की शामिल है।
एक विक्टिम को एंकल पर इंजरी आई और दूसरे को फोर आर्म पर गोली लगी, जबकि लड़की की इंजरी के बारे में फिलहाल कुछ नहीं बताया गया। विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और ऑफिसर्स के मुताबिक तीनों की जान बचा ली जाएगी। पुलिस ने सस्पेक्ट को ट्रेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। Detective Black, B-L-A-C-K, like the color, with Houston Police Department, Major Assaults Division. Patrol officers were dispatched out to the 3100 block of Alabama for a shooting that just occurred. Victims were outside talking with each other with family when a black four-door sedan drove by, started firing multiple rounds at them. We have 3 victims, 2 adult males and 1 juvenile female. All 3 were transported to the hospital. The 2 males are in stable condition. The female is currently in surgery at this time, and we don't know the full extent of her injuries. It was family members that were gathered, congregating together, and no one's had any altercations or can explain why this happened, but the shooting lasted almost the entire length of the block. ह्यूस्टन में ग्रेनफिल लेन पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। एचएफडी ने विक्टिम को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। रेजिडेंट्स ने क्लेम किया है कि शूटिंग के वक्त वो घर में मौजूद थे। विक्टिम को स्टमक में गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। पुलिस को स्ट्रीट के पार एक डेथ से कुछ बुलेट केसिंग्स भी मिली हैं, जबकि पुलिस अब भी मामले की फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साइप्रस एरिया में हाईवे 99 पर रॉन्ग डायरेक्शन में जाने वाला मोटरसाइकिलिस्ट फेटल क्रैश में जान से हाथ धो बैठा। एक्सीडेंट के बाद ब्रिजलैंड क्रीक पार्कवे पर सभी साउथबाउंड लेन्स को 3 घंटों तक के लिए बंद रखा गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिलिस्ट किसी तरह से ग्रैंड पार्कवे पर एंटर हुआ और साउथबाउंड लेन्स पर नॉर्थबाउंड जाता रहा। रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हुए बाइकर की एक 18 व्हीलर से सामने से टक्कर हुई और मोटरसाइकिलिस्ट की मौके पर ही डेथ हो गई। सीन पर मौजूद डेप्यूटीज का कहना है कि मोटरसाइकिल रिपोर्टेडली चोरी की थी। Okay, today at approximately 1:55 in the morning, dispatch received a call in reference to a motorcycle that was going the wrong way on State Highway 99. The caller advised the motorcycle was traveling northbound in the southbound lanes of 99 around the 529 area. Before the intersection of House Hall Road, the motorcycle collided head-on with a truck tractor that was traveling southbound. It was a head-on collision. The motorcycle operator sustained serious bodily injuries and was pronounced deceased on scene. The truck tractor continued traveling south, hit the cable divider, and came to rest in the median. The driver of the 18-wheeler was not injured. There was a passenger in the 18-wheeler also in the truck tractor that was not injured also. The only fatality out here is the motorcycle rider. कैलिफोर्निया और उसके एडजेसेंट स्टेट्स में वाइल्ड फायर्स तेजी से फैल रही हैं, जिससे बहुत से एरियाज में आज आसमान सुर्ख नजर आया। डिटेल्स देखते हैं इस रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया स्टेट एक बार फिर आग की जद में है। पिछले साल की तरह इस बार भी ड्राई कंडीशंस और समर हीट की वजह से स्टेट में कई एरियाज में वाइल्ड फायर्स तेजी से फैल रही हैं। बदकिस्मती से कैलिफोर्निया में फैलने वाली फायर्स के पीछे एक्सीडेंटल रीजंस भी हैं। एक ऐसे इंसिडेंट में एक जेंडर रिवील पार्टी में यूज होने वाले फायरवर्क्स वजह बताए जा रहे हैं। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के बे एरिया में आसमान ऐसे लाल हुआ है जैसे क़यामत का मंजर हो। कैलिफोर्निया स्टेट में वाइल्ड फायर्स ने नेशनल फॉरेस्ट के करीब रहते बहुत से लोगों को अपने घर छोड़कर सेफ एरियाज में शिफ्ट होने पर मजबूर किया है। I was wondering what time it was, and then I looked outside and it looks like doomsday. I mean, you could tell something is horribly going wrong, and as far as going to work and breathing in all this pollution is definitely not healthy for us as in the Bay Area. It's amazing to see how air pollution is in our face, right? When we have events such as biomass burning, wildfires that produce such a high density of air particles in the atmosphere that diffuses the light, and this is what we're seeing, right? It feels like the end of the world. It's pretty scary. I mean, I'm a lifelong Californian, and it makes me weep for what we've done to my poor state. आग से ओरेगन की कम्युनिटीज़ भी अफेक्ट हुई हैं और इसका दायरा सियाटल तक फैला हुआ है। बहुत से एरियाज़ में हुकाम घर घर जाकर इवैक्यूएशंस को यकीनी बना रहे हैं। ओरेगन में तो बहुत से एरियाज़ में स्कूल ओपनिंग्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। फायर फाइटर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वाइल्ड फायर्स को किसी तरह कंटेन किया जा सके, लेकिन हाई विंड्स उनके काम में रुकावट बनी हुई हैं। बर्कले कैलिफोर्निया से हमें एक व्यूअर ने फुटेज भेजी है
जिसमें सुर्ख आसमान वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस अपना सबसे ज़्यादा असर यूनाइटेड स्टेट्स में दिखा रहा है। 6.32 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्शंस के साथ इन्फेक्टेड कंट्रीज़ की लिस्ट में यूएस अब भी टॉप पर मौजूद है, जबकि कंट्री वाइड वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 189,699 हो चुकी है। फॉल सेमेस्टर शुरू होते ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से डिटेक्ट हो रहे हैं। रीओपनिंग के बाद सभी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में अब तक 37,000 स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने वाले स्टेट्स की अगर बात करें तो कैलिफोर्निया में 747,126 पॉजिटिव केसेस और डेथ टोल 13,849 कंफर्म किया गया है। टेक्सास में टोटल 662,427 केसेस और 13,792 डेथ्स रिपोर्ट हुई। फ्लोरिडा में केसेस 650,092 हैं और डेथ टोल 11,951 हो चुका है। न्यूयॉर्क में टोटल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 440,578 और 33,016 पेशेंट्स की मौत हुई। जॉर्जिया में कंफर्म केसेस 285,350 और 6,070 लोगों की मौत हुई। इलिनॉय में 254,276 केसेस और 8,405 डेथ्स रिपोर्ट की गई। एरिजोना में कंफर्म केसेस 206,045 और 5,221 पेशेंट्स की मौत हुई। न्यू जर्सी में 194,667 लोग इन्फेक्टेड और मरने वालों की तादाद 15,996 है। और नॉर्थ कैरोलिना में 178,635 केसेस और डेथ टोल 2,909 है। ह्यूस्टन फायर डिपार्टमेंट के कैप्टन टॉमी सीयर्सी कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए। HFD में 18 साल का तजुर्बा रखने वाले सीयर्सी कुछ हफ्तों से मेमोरियल हरमन हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर में थे। उनकी मौत पर ह्यूस्टन प्रोफेशनल फायर फायर्स एसोसिएशन ने काफ़ी दुख का इजहार भी किया है। ह्यूस्टन प्रोफेशनल फायर फायर्स एसोसिएशन ने फेसबुक पर एक स्टेटमेंट में लिखा है कि HFD की तरफ से टॉमी सीयर्सी की मौत को लाइन ऑफ ड्यूटी डेथ के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। वो कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन से मरने वाले तीसरे ह्यूस्टन फायर फायर हैं। ह्यूस्टन फायर चीफ सैम पेना ने भी सीयर्सी की मौत पर अफसोस करते हुए कहा कि HFD ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फायर ऑफिसर, सेल्फलेस टीममेट और टायरलेस पब्लिक सर्वेंट को खोया है। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो न्यूयॉर्क सिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस ब्रीफिंग में गवर्नर कोमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में कोविड-19 आउटब्रेक के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं। ये फैक्ट ट्रंप, CDC और डॉक्टर फौची ऑलरेडी एडमिट कर चुके हैं। गवर्नर ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क में वायरस चाइना से नहीं बल्कि यूरोप से आया है। What Ford did pales in comparison to what Trump is doing. Not only did he tell New York City to drop dead, Trump is actively trying to kill New York City. It is personal. I think it's psychological. He is trying to kill New York City. He passed SALT, which was targeted just at New York City. Tax reform cost us $14 billion. Donald Trump caused the COVID outbreak in New York. Donald Trump caused the COVID outbreak in New York. That is a fact. It's a fact that he admitted, and the CDC admitted, and Fauci admitted. The China virus, the China virus, the China virus. It was not the China virus. It was the European virus that came to New York. They missed it. New York City, Portland, Chicago, right? These are the enemies from the president's point of view. Look at his tweets. These are the locations and the outposts of the enemies. So don't provide them any funding, even though we caused the COVID virus. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कमला हैरिस को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाना यूनाइटेड स्टेट्स की बेइज्जती होगी। नॉर्थ कैरोलिना के विंस्टन सालम में कैंपेन इवेंट के दौरान ट्रंप ने कहा कि लोग कमला हैरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो कभी भी उन्हें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं देखना चाहेंगे। Kamala Harris, Kamala. Remember Kamala? She started at 15. She was supposed to win. Problem was she went from 15 to 14 to 12 to 10 to 7 to 4. It's like a free fall. You know why people don't like her? Nobody likes her. She could never be the first woman president. She could never be. The Washington vultures ripped apart our towns in exchange for his party's nomination. Biden has now formed an unholy alliance with the most extreme and dangerous elements of the radical left. You know that, with Crazy Bernie and everyone. And by the way, you know who's further left than Crazy Bernie? Kamala.
Kamala. You remember she left the race. Sort of interesting that they picked her, because in theory they should be able to win California. I don't know, maybe we'll make a play for that one too. पुलिस कस्टडी में डैनियल प्रूट की मौत पर रोचेस्टर न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ ने अपने कमांड स्टाफ समेत रिजाइन कर दिया। रोचेस्टर में 41 ईयर ओल्ड ब्लैक शख्स डैनियल प्रूट की मौत मार्च में पुलिस अरेस्ट के दौरान हुई थी। विक्टिम की फैमिली की तरफ से बॉडी कैमरा फुटेज रिलीज किए जाने के बाद शहर में एक हफ्ते से प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। इंसिडेंट पर पुलिस चीफ की रिटायरमेंट का ऐलान रोचेस्टर मेयर लवली वैरन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने रेजिडेंट्स को यकीन दिलाया है कि पुलिस डिपार्टमेंट के मेंबर्स अपनी ड्यूटीज जरूर फुलफिल करेंगे। I am confirming that Chief Laurent Singletary today announced his retirement along with Commander Morbido. I want to thank Chief Singletary and Commander Morbido for their service, and we appreciate them. I want to assure our Rochester community that the Rochester Police Department will continue to serve and protect our residents and our neighborhoods. Chief Singletary will remain in charge of the department through the end of the month, and I know that he and the officers will fulfill their duties. We have spoken about maintaining our restraint regarding the ongoing protests and ask all involved to remain peaceful. While the timing and tenor of these resignations is difficult, we have faced tough times before. I truly believe that we will get through this. I will be meeting with City Council to chart a path forward. I can assure this community that I am committed to instituting the reforms necessary in our police department. I know that there are many questions, but this just occurred, and honestly, I do not have the answers today. However, I will work diligently with my partners in government to provide those answers and share them with you in the coming days. यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट में अनप्रेसिडेंटेड टेम्परेचर और तेज हवाओं की वजह से वाइल्ड फायर्स ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। रेजिंग वाइल्ड फायर्स ने वाशिंगटन के मेल्डन टाउन को तबाह कर दिया, जबकि ऑरेगन और कैलिफोर्निया में कम्युनिटीज के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। सिएटल से 480 किलोमीटर दूर पर लोकेटेड मेल्डन टाउन में फायर स्टॉर्म की वजह से 80% घर तबाह हो चुके हैं। डैमेज होने वाली दूसरी बिल्डिंग्स में फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सिटी हॉल और लाइब्रेरी भी शामिल हैं। ब्लेज के पहुंचने से पहले ही अथॉरिटीज ने डोर टू डोर जाकर घर खाली करने के ऑर्डर्स इशू कर दिए थे। बताया जा रहा है कि पूरे टाउन में आग को फैलने में सिर्फ 3 घंटे लगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी केली मैकनानी कहती हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की संगीनी के हवाले से अमेरिकन को इंटेंशनली मिसलीड नहीं किया। केली के रिमार्क्स आज उस वक्त सामने आए जब CNN के एक रिपोर्टर ने आज सुबह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ फरवरी में इंटरव्यू की कुछ रिकॉर्डिंग्स की बात की, जिनमें ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा है और कई बार कहा है कि वो जानते हैं और जानते थे कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और शदीद जानलेवा और एयरबोर्न वायरस है, लेकिन वो हकीकत बताकर अमेरिकन को पैनिक नहीं करना चाहते थे। Did President Trump intentionally mislead the American people about the threat of COVID? Absolutely not. This president, at a time when you're facing insurmountable challenges, it's important to express confidence. It's important to express calm. Always playing it down. Is that expressing calm? It seems dishonest. So this president does what leaders do, good leaders. It's stay calm and resolute at a time when you face an insurmountable challenge. That's what this president has done. It will not appear that Dr. Fauci is also apparently on the record saying of President Trump that his attention span is like a minus number and his sole purpose is to get reelected. That's according to veteran journalist Bob Woodward. I think the bottom line here is that the president, by his own admission in private on the record, acknowledged the depth of this crisis and yet told the American people something very different. How is that at its core not an abject betrayal of the public trust? The president has always been clear-eyed with the American people. He was always clear-eyed about the lives we could lose. Again, from this podium, he acknowledged that this was serious back in March, that 100,000, 200,000 lives could be lost. कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम का कहना है कि वाइल्ड फायर से इस साल अब तक 2.3 मिलियन एकर्स का नुकसान हो चुका है। प्रेस ब्रीफिंग में गवर्नर ने कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा फायर सीजन है। न्यूसम का कहना है कि क्लाइमेट चेंज को ना मानने वालों को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 118,000 acres were burned in 2019 by this time last year. You can see close to just shy of 2.3 million acres
have been burned this year. Historic is a term we seemingly often use here in the state of California, but these numbers bear fruit to that assertion that this is historic. This is the largest fire season we've had in terms of total acreage impacted in some time, back recorded recent modern history, but nonetheless, you put it in comparison terms, in contrast to last year, it's rather extraordinary, the challenge that we've faced again so far this season, 2020. I quite literally have no patience for climate change deniers. It simply follows completely inconsistent, that point of view, with the reality on the ground, the facts as we are experiencing. You may not believe it intellectually, but your own eyes, your own experiences tell a different story, particularly out here in the West Coast of the United States, and particularly here in the state of California. 48 आवर्स में कोलोराडो के वाइल्ड वेदर ने गर्मी और सर्दी के नए रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। लेबर डे वीकेंड पर गर्मी झेलने के बाद कोलोराडो रेजिडेंट्स अब हर तरफ स्नो विटनेस कर रहे हैं। असिस्टेंट स्टेट क्लाइमेटोलॉजिस्ट बैकी ब्लिंगर कहते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसा रोलर कोस्टर फोरकास्ट नहीं देखा। फोर्ट कॉलिंस में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट सेंटर की तरफ से ट्यूसडे मॉर्निंग 0.3 इंचेस तक स्नो मेजर किया गया था। और हिस्ट्री को देखा जाए तो एरियाज में अर्ली स्नोफॉल का पिछले 130 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इससे पहले संडे को हाईएस्ट टेम्परेचर 99 डिग्रीज रिकॉर्ड किया गया था और सैटरडे को फोर्ट कॉलिंस में टेम्परेचर ने 100 डिग्रीज बीट किया। नेशनल वेदर सर्विसेज के मुताबिक नेवाडा, यूटा, वायमिंग और कोलोराडो में कनाडा से आने वाली ठंडी हवाओं के बाद 6 इंचेस तक की स्नो एक्सपेक्टेड है, जबकि 35 माइल्स पर आवर की रफ्तार से हवा सारा दिन चलती रहेगी। यूएस और चाइना के बीच बढ़ती ट्रेड टेंशंस की वजह से कंपनीज काफ़ी कंसर्न नजर आ रही हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि चाइना में मौजूद यूएस कंपनीज को डर है कि दुनिया की 2 बिगेस्ट इकॉनमीज के बीच ये टसल कई साल तक जारी रह सकती है। इनमें से बहुत सी कंपनीज का कहना है कि इन टेंशंस की वजह से उनकी स्टाफ रिटेन करने की एबिलिटी इफेक्ट हो रही है। एनुअल बिजनेस सेंटिमेंट सर्वे शंघाई में अमेरिकन चैम्बर कॉमर्स और कंसल्टेंसी PwC चाइना की तरफ से कंडक्ट किया गया। सर्वे में शामिल हाफ फर्म्स को लगता है कि यूएस और चाइना के बीच टाइज 3 साल तक ऐसे ही रहेंगे। 27% फर्म्स का मानना है कि हालात हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाले हैं। रिपोर्ट रिलीज करने के दौरान बिजनेस चैम्बर्स के प्रेसिडेंट का कहना था कि अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस वक्त टॉप कंसर्न यूएस चाइना टेंशन है। बीजिंग और वाशिंगटन एक दूसरे से डायलॉग के जरिए इशू को रिजॉल्व करें क्योंकि इससे बिजनेस परफॉर्मेंस पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। But we've been also trying to push as hard as we can to get both the expats and their dependents back, and as well as teachers and administrators back into China, because it's a community. This community, to be successful, it needs all those elements. Our sense is that that the Chinese government does understand the needs and is making some moves to try and accelerate the process to bring people back. 2 रोज बाद 9/11 अटैक्स की 19th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में हाईजैक्ड जेटलाइनर्स क्रैश होने से 3000 के करीब लोग मारे गए थे। मरने वालों की याद में न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी और पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविल में हजारों लोगों की भीड़ एक्सपेक्टेड है। न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 मेमोरियल पर एक सेरेमनी रखी जाएगी जहां मोनर्स हर साल की तरह इकट्ठे होंगे। 8:46 AM पर सिटी वाइड पहला मोमेंट ऑफ साइलेंस ऑब्जर्व किया जाएगा। ये वो वक्त है जब अमेरिकन एयरलाइनर फ्लाइट 11 नॉर्थ टावर से टकराई थी, जबकि सेकंड पॉज 9:03 AM पर ऑब्जर्व किया जाएगा। इस टाइम पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने साउथ टावर को हिट किया था। और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बेल हेयरिंग तक मुंबई के बायकुला जेल में रखा जाएगा। चक्रवर्ती को एक रोज पहले इंडिया के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ लिंक्ड ड्रग केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जून 14 को मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को सबसे पहले एक्सीडेंटल रिपोर्ट किया था और लोकल मीडिया ने इसे सुसाइड कहा था, लेकिन इस मामले में किसी भी तरह के फॉल प्ले को डिटेक्ट करने के लिए फेडरल पुलिस एजेंसी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। केस से लिंक पर डिसीज एक्टर की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और दूसरे लोगों से क्वेश्चनिंग भी की जा रही है। लास्ट मंथ इंडिया की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड में बेरिंग, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और थेफ्ट का इल्जाम लगाया गया था, जबकि लास्ट वीक एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को भी अरेस्ट कर लिया था। The NCB themselves have asked judicial custody for all accused save except Keshwani,
who is granted NCV custody till 14. All bail applications are filed, served copy to NCB, and the hearings are kept tomorrow. Including Riya Chakraborty, every accused, all bail applications are kept tomorrow for hearings. और आइए अब जानते हैं वेदर अपडेट्स। And that's all for now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.